Hello, everyone. Good evening. Hello, everyone. Good evening. Fantastic. So let's start. Please type yes if you can hear me. Super. All right, guys. So there you go. We've got fewer stocks today. It seems like either the trend is changing or there are re-entry opportunities in the weekly charts. But to be honest, from whatever I have scanned, it feels like there are few stocks that are changing trends, and there are few stocks which are giving you re-entry opportunities. So my advice is take each stock as its own and do some sectoral analysis. That is pretty that will be of use. But anywho, let's analyze a few stocks that we have. So we've got about 17 stocks. So let's talk about that. Generally we have about 30-24 stocks, so it's not too bad, but we've got some decent setups. So let's start with Ashok Leyland. So Ashok Leyland at EMA, you've got a bullish divergence. We've got this in the last time in the list as well. And believe me, guys, whatever is coming here, जो भी हम stock analyze कर रहे हैं, बहुत अच्छे stock picks मिल रहे हैं हमें. The only thing is, maybe it doesn't hit immediately on a Monday, maybe on a Tuesday, Wednesday, but आपको, entry lena hai, to have faith in the system. This is for the people who are in the tribe, and for the people who are not in the tribe and who are here, thank you very much for coming. अगर आप यहाँ हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए समझने का. अगर नहीं समझ आता है तो there's only one way. You need to get into the course, learn how to do it. किसी से भी सीखिए, आप मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, लेकिन सीखिए, and then only jump into this world of stock market. All right. So again, as I said, Ashok Leyland at weekly EMA, there was a bullish divergence, went up at EMA. You got another opportunity on the upside. Earnings tha us samay, so we excuse that. And now you can see here gap up. So if you want me to draw the gap, I can draw the gap here. So that's your gap up, and gap exhaust nahi ho raha hai, and gap test hone ka zyada chances hai. So it is still at daily EMA. There's no bullish divergence here, but you can see the weekly CPR. मैं अर्ली चार्ट को थोड़ा सा छोटा रखा हूं just because we have a better clarity on a daily and a weekly time frame. So if it goes above the weekly CPR, you see my alert is right there, then maybe this could be something that you would like to get on to. All right, monthly CPR के ऊपर है, the black line in the early chart, you can see that's the monthly CPR. I've removed it from my daily chart right now so that daily chart का clarity ज़्यादा हो. And early chart में अगर weekly CPR के ऊपर जाएगा, which is a narrow weekly CPR, then maybe you get an opportunity on the upside. But again, a gap up opening would be best because ऐसा कोई bullish candle अभी यहाँ पे है नहीं. और apart from that, of course, if it breaks the R1, the levels, ये जो daily में आप 176.3 के आसपास के levels देख रहे हैं, reject हो रहे हैं जो बार-बार, अगर उसके ऊपर चला गया तो nothing like it. You can have a small stop loss here as well. So Ashok Leyland is in that kind of setup here. Then we have Axis Bank. Axis Bank, surprisingly, and in fact with all other banks as well, because of whatever news has come, but setups sab mein the. Bearish divergence in Axis Bank in the weekly chart goes above double top. यहाँ पे 012 kind of a setup, but double top जिसमें bearish engulfing candle बना है weekly chart में, which is very very poor. Now of course अगर Monday को 50% ऊपर खुल जाता है, मतलब closing के 50%, इस candle के 50% के ऊपर खुल जाता है, then we need to wait क्या होता है क्या नहीं होता है देखने के लिए. But looking at this double top setup and the fall and everything else, it seems like it's going to be one on the downside. Now here the monthly CPR is
right here on the black narrow monthly CPR. अगर इसके नीचे जाता है, क्लोज होता है, then you can take that call. 2 हफ्ते अभी भी बचे हैं मंथ खत्म होने के लिए. या शुरू में ये अगर यहीं पे खुल के ऊपर जाता है, ये टेस्ट होता है and spend some time there and then gives you an opportunity that also can be taken. All right, but yes, weekly setup is bearish and hence RSI and MACD both suggest weakness in Axis Bank. फिर हम आते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे. क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में it is, so it goes, there was a bullish divergence, goes higher, takes a dip. So if I put my retracement here, अगर मैं रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, अब देखो 61.8% तक आया है. अब नाउ 61.8% में आई हैव अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर इन द डेली चार्ट एंड अ 012. So let me remove this first, and a 012 here as well. So if I put my retracement in the daily chart now, अब देखो 78.6, which is super, right? And 78.6, and now if we are looking to buy, because daily, weekly pullback and daily a 012 kind of a setup looks all right according to the hourly candles as well. So you can use the weekly CPR, which is not a single line CPR but a narrowish CPR. You can use this for opportunity on the upside, but there is one here, and अगर इसका हम target identify करने की कोशिश करेंगे, so somewhere here should be where you should expect the prices to end at. All right, so this is again a good setup for next week. Maybe next week or फिर carry on भी हो सकता है to the week after. Now we come to Dr. Reddy. Dr. Reddy के बारे में हमने पहले भी बात किया है. Dr. Reddy, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि इसको लिस्ट में रखो. वीक ये बढ़ नहीं रहा था, टिक टिक करके नीचे आ रहा था, but finally it has given a breakout. Now अगर आपको इसमें अभी भी एंटर लेना है तो there is one way, either it gives a pullback, so either it comes here, which is also the new CPR here, which is wider, and then you get an opportunity on the upside. That would be the best probable scenario, because daily monthly CPR ke R1 pe hai the prices right now. So if it does come here near the CPR and then gives you an opportunity, one should take it. Dr. Reddy is on the buying side. Federal Bank is in the list because it has a very good shooting star, like bad for the price of course, but good shooting star here, and there's a bearish divergence in the weekly chart which suggests weakness. But once again, as I said, although it does suggest weakness, uska low टूटना जरूरी है, confirmation होना जरूरी है. तो अगर Monday gap up खुलता है, then of course we don't have anything here. But अगर आज का low टूटता है और ये CPR kind of helps you to take a trade, then fair enough. But otherwise monthly R1 के नीचे आ चुका है. So best case scenario would be, I think best thing if I have to do is if I draw this and let's say the prices come till the CPR and then give you an opportunity, that would probably be the best case. But nonetheless, if the weakness continues, if the momentum continues or iska low toota hai, then of course you can take a call there itself as well. Okay, so Federal Bank, because it has a weekly May bearish divergence, hence it is in the list here. Then we come to GAIL. Now GAIL again, there's a bearish divergence, of course it fell, it's gone up. So अगर मैं अपना retracement बनाऊंगा यहाँ पे, आप देखो 78.6% पे hit किया है, that means it's a probable 012. Of course आप देख सकते हो मेरा alert लगा हुआ है यहाँ पे, which basically means कि अगर इसके नीचे जाता है तो 012 is confirmed, and I would like to start selling it or looking for selling opportunities anyway. Now a monthly CPR is wide, so we will ignore it. अगर मैं यहाँ पे monthly CPR लगाता हूँ, so it is something like this, and I'm just putting it so that you can see the trend, right? It's a wide monthly CPR. That means ये ऊपर गया है तो नीचे आके sideways end करेगा ताकि next month का CPR narrow बनेगा. अभी मैं थोड़ा सा logic लगाने का try करता हूँ, which probably it makes sense. Higher high, higher lows हो रहे थे, ये lower low बनाया है, lower high बनाया है, and probably weakness दिखा सकता है. Once again, as I said, hourly may, of course, you have a narrow CPR, you could probably use that if it makes sense. And of course, you have the low that needs to be broken for any kind of confirmation. Maybe Monday nahi hoga because of the candle that I have here. Maybe Monday nahi hoga. Let me just zoom in here. Maybe Monday is a quiet day, and then Tuesday onwards you get a trade in this. So either way, that's the plan if it hits. So GAIL ka ye situation hai.
Then you have Glenmark Pharma. Glenmark Pharma had a sensor divergence, came to EMA. EMA pe we have a bullish divergence in Glenmark. You can see there's a trend line here as well. There's a support line here as well, which seems like a false breakout. Very good setup. Now, मेरा अलर्ट इसमें अर्ली चार्ट पे लगा हुआ है कि अर्ली चार्ट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो जाता है, I wanted to buy today, but you can see, there's no movement. Weekly CPR is ending. We have a wide weekly CPR, so maybe it comes down a wee bit, gives you a 0, 1, 2, or maybe comes down, takes support from the CPR, and then gives you a breakout. Either way, something that I'm waiting for. I have an alert. जो अर्ली चार्ट का कैंडल होता है, अगर उसके ऊपर बंद होता है, then I'm in. I mean, anyway, but because setup is decent, right? So Glenmark का setup अच्छा है. Something in my watch list as well. ITC again bullish divergence है, थोड़ा shady है, but है nonetheless. At weekly EMA, daily में, at weekly EMA you have a weekly divergence, which is pretty rare. Generally you monthly EMA, weekly divergence ऐसा होता है. But यहाँ पे I'm not getting there's a wide CPR. I'm not getting that move on the upside. So मुझे नहीं पता क्या करना है. Maybe a narrow CPR को use करके take a trade if you get one. But that means that everything else also is, the market supposedly will be bullish if you're looking to buy ITC here. तो ITC का भी भाई जैसे मैंने बोला कि stock specific आप trading करो. Don't look into what's happening in the market, in the indices especially, because Nifty and Bank Nifty both are opening gap up, gap downs, and both are acting funny right now. So you can't really enter during the market. आप stock specific setup पे trade करो. Kotak Bank, weekly bullish divergence, triple bullish divergence, which basically means it's a good setup and you're hoping for the prices to go higher. Now, of course, you can see monthly R1 से resistance लेके नीचे गिरा है. Monday, as I said, could be the day that takes support from the EMA in the daily chart and then give you a trade on the upside. If that happens, then be aware of that and use the weekly CPR. अगर आज का न्यूज कोई फर्क नहीं पड़ता है, कल मंडे डिफ्यूज हो जाता है and ये गैप अप खुल जाता है, then of course you can take help of the narrow CPR in the weekly chart and take a trade there as well. But yes, monthly CPR narrow है, so you're expecting a move on the upside. Weekly में triple bullish divergence है, so you are expecting something here. फिर हम आते हैं लॉरस लैब्स पे. लॉरस लैब्स में लेट मी गो, मैंने ये ट्रेड शेयर ग्रुप में भी शेयर किया था, बट if you can see this, it's at monthly EMA per candles, right? And weekly chart में, so there was a bearish divergence, it 012, it fell, corrected, अगर ये डबल टॉप माना जाएगा, so आप देख रहे हो नेकलाइन तक आया and then take in resistance. This time at EMA you have a doji kind of a setup. Now in the daily chart you can see there's a beautiful trend line here. That's your point of interest as well. So नीचे गिरा, फिर ट्रेंड लाइन टेस्ट किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट किया. वीक मंथली CPR on the daily chart is pretty wide, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे. हमारा सिंगल लाइन CPR था, तो I didn't know what to do, इसलिए कुछ हुआ भी नहीं. Now we have a narrow CPR next week, and hopefully it breaks the S1 and starts falling. So if it kind of breaks, at least the previous low should be the target for this particular setup. All right, once again guys, anything that I discussed today or anytime on a Friday webinar is only for educational purpose, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस के हेल्प से सेटअप्स फाइंड कर सकते हैं. बट ये किसी भी तरीके से का कोई स्टॉक टिप नहीं है. सो अगर आपको ट्रेडिंग लेना है और आप हमारी ट्राइब में नहीं हो, सो आप प्लीज यूज इट इन योर ओन सिस्टम. अगर आपके पास सिस्टम है, आप उस पर अप्लाई करके देखो, और या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके करो. बट do it at your own risk, of course. This is just what I do as per my setup. Okay, so Lotus Labs on the short side, of course, because you can see this is how it is. मेरा अलर्ट ऊपर क्यों लगा हुआ है? ऊपर इसलिए लगा हुआ है ताकि ये मेरा स्टॉप लॉस वाला रीजन है. सो वंस if it does come here, then at least I know what to do about it. तो मैं थोड़ा सा cautious हो जाऊंगा and I'll try manage my trade. Then we have LTTS, which is at weekly EMA. It has gone up at monthly. I don't know why it's in the list right now, but I think I would like to re-enter this if possible. But इसको अभी हटा देते. So I've got one stock less. That is 16 stocks now. Let's go to Marico. Marico में you have an engulfing bull. Let me zoom out. So you've got an engulfing bull here. So it could probably go up because there's a daily bullish divergence here. And today is the first uptick. Now monthly CPR, of course, is wide. Weekly is narrow. If it kind of tests near the CPR and goes up, fair enough. Or you can use the weekly CPR as well to enter a trade.
but yes, there is a bullish divergence in the daily chart, hence it is in this particular list. फिर हम आते हैं मदरसन सुमी पे. मदरसन सुमी वीकली ईएमए पे से ऊपर गया था, नीचे नीचे करेक्ट हुआ, एंड अब जाके you have a bullish divergence here on the daily chart, but it's not, and the best part is the tick up, the first tick up was from the S1 in the monthly CPR. तो वो तो हो चुका, लेकिन उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ, फिर टिक डाउन हुआ, फिर टिक अप हुआ परसों, एंड कल उसका थोड़ा सा फॉलो थ्रू हुआ, एंड आज अगेन ऑफ कोर्स विद द सेंटिमेंट इट डिड नॉट रियली डू मच. नैरो सीपीआर था, उसके ऊपर जाके फॉलो थ्रू अच्छे से नहीं दे पा रहा था. अब अगेन वी हैव अ नैरो सीपीआर, एंड इफ इट काइंड ऑफ गोज अप और गैप अप या ऐसा कुछ खुलता है, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑन द अपसाइड. So monthly CPR से S1 तक आ चुका है, and you expect the prices to kind of break on the upside in the last couple of weeks. But again, be aware of the market sentiment and be aware of how the prices are opening. अगर gap up खुलता है, yes, you have an edge on buying stocks. अगर gap down खुलता है या उसी area पे खुल जाता है, then you just follow the setups that has been discussed. फिर हम आते हैं सेल पे. सेल पे you can see weekly chart पे हम सेल नीचे गिरा, यहाँ वीकली पे आया. डेली चार्ट में देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, सो द फर्स्ट इंस्टेंस इज इफ इट गोज अबव द ईएमए, देन वो नीचे आके टेस्ट होता है ईएमए पे. वो टेस्ट हो चुका. टुडे इट्स अ 50% अबव कैंडल, इट्स अ डिसेंट कैंडल. देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, एंड दैट्स योर नैरो सीपीआर हियर, सो यू कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो एटलीस्ट टिल दिस लेवल. अब if I just turn it around here, something like this, then you have a head and shoulder as well. So you've got shoulder, head, shoulder. So if it kind of breaks out, अगर ये breakout होता है, तब आप head and shoulder का भी trade ले सकते हो, and 84 to 90, about 6 points का आपको यहाँ पे target achieve हो सकता है. So this is the setup that you have. But एक बार का ध्यान रखिएगा, जब ये breakout होगा, ये bearish divergence नहीं बनना चाहिए. लगता नहीं है बनेगा, because seems like a decent setup right now, but still you gotta think about that as well. But मैं इसको horizontal line की तरह ही रखूंगा, because I would like to see this as a point of interest for now. All right, okay, so that is sale for you. Then we have फिर हमारे पास आता है यूपीएल. यूपीएल इसलिए है क्योंकि यूपीएल में हमारे पास वीकली में बुलिश डाइवर्जेंस है. आई डोंट नो इफ इट्स गोना कंफर्म, बिकॉज ये टिकअप इतना अच्छा कैंडल के साथ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है. And if I kind of go back a little and draw my support resistance line, तो वो इस तरीके से इस लेवल पे आता है. So अगर ये तुरंत नेक्स्ट वीक ऊपर भाग जाता है, so this पूरा प्राइस एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह ट्रीट होगा. अगर हम डेली पे आते हैं, तो डेली में बेरिश डाइवर्जेंस है, सॉरी आरडी में बेरिश डाइवर्जेंस है डेली चार्ट के ईएमए पे. So अगर ये नीचे की ओर जाता है and goes below the weekly CPR, then you can expect the prices to go down, and maybe the weekly divergence is not ready yet. बट अगर वीकली कैंडल के ऊपर जाता है प्राइसेस, एंड आई थिंक देयर इज अ डाइवर्जेंस दैट कुड बी ट्रेडेड. ठीक है, सो यूपीएल इज इन द लिस्ट बिकॉज ऑफ दैट. फिर हम आते हैं वेदांता पे. वेदांता ऑफ कोर्स पहले से हमारे लिस्ट पे था बिकॉज ऑफ द बुलिश डाइवर्जेंस हियर, एंड देन ऑफ कोर्स वी गॉट ट्रेड इन हियर. अब जाके ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया. इट्स टेकिंग अ डिप. यहाँ पे अगेन वी वुड लाइक टू एंटर. मे बी मंडे एक और डिप आएगा, यू विल गेट अ गुड kind of a pullback till the EMA. Maybe एक dip आएगा जहाँ पे you get a bullish divergence in the early chart. I'm just saying maybe, and then you get a move on the upside. तो shoulder, head, shoulder यहाँ पे भी बन के and then breakout हो सकता है. All this is again maybe. So ये हमारी लिस्ट में इसलिए क्योंकि weekly में है bullish divergence, and you want the prices to go higher if you get an early bullish divergence or something like that, or maybe a good candle at EMA here. Then we have Voltas. Voltas का सेटअप ऐसा है कि एट वीकली ईएमए पे है. देयर इज नॉट द बेस्ट डाइवर्जेंस हियर, बट इट्स कंसोलिडेटिंग हियर, राइट. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इट्स अ रेक्टेंगल काइंड ऑफ अ सेटअप, excuse me, and you can probably wait for it to break on the upside or give you a nice bullish divergence. There is a bullish divergence here from this trough to this trough. यहाँ पे है, ये आपका अपटिक है, हाई नहीं टूटा. फिर आपका अपटिक है, हाई आज के दिन एक स्पाइक में टूटा इन द फर्स्ट कैंडल, बट इट हैज नॉट क्लोज्ड अबव द सीपीआर एंड फॉलो थ्रू, जो कि नेक्स्ट डे हो सकता है, मतलब नेक्स्ट वीक हो सकता है, मंडे को. मे बी मंडे को आपको एक गैप अप या समथिंग मिले जो सीपीआर के ऊपर बंद हो जाए, एंड देन यू गेट ट्रेड ऑन द अपसाइड. सो वोल्टास इज आल्सो अ डिसेंट सेटअप ऑन द अपसाइड इफ इट डज गिव यू अ ट्रेड ऑन द अपसाइड. ठीक है, सो I mean surprisingly only few stocks here.
So before I go to the indices, I would like to take up the stocks if you want. कौन से stocks आप चाहते हो कि मैं देखूं? So if you or in fact, let us go to the investment stocks first. Let us go to the investment stocks first और उसको डिसाइड करते हैं. कुछ स्टॉक्स हैं मेरे पास जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सेटअप्स पे बैठे हुए हैं, तो उसको हम पहले बात करते हैं. IEX उसमें से पहला स्टॉक है. IEX अभी मंथली डाइवर्जेंस शुरू ही हुआ है और हमने देखा है कितनी बार कि ये मंथली स्टॉक्स कितना क्या कर देता है. So weekly chart में you can see there's a trend line breakout, retest, and this week's candle is also decent. Now daily chart में of course R1 के ऊपर है, you can see couple of dojis and maybe confusion candles. So maybe ये EMA तक आएगा and then gives you an opportunity. That is also okay. Nothing to worry about. But this setup here is fantastic. In fact, अगर मैं छोटे छोटे ट्रेंड लाइंस बनाना शुरू कर दूं तो ये मेरा एक डेली में भी ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेकआउट हो चुका है. सो मे बी इट कम्स बैक टू टेस्ट like these levels and then go back up. It is not a big deal, or maybe it doesn't and it starts going back up. So you can do various things with it. अगर आपको फ्यूचर्स लेना है तो दूसरे मंथ का फ्यूचर, तीसरे मंथ का फ्यूचर लेके एक रिस्क ले लो एक लॉट का, या आप कैश स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो बहुत ही अच्छी बात है. दिस इज द टाइम to enter as well. Again, as I said, it's not a tip, it's just how I work. Then we come to Tasty Bite. Tasty Bite एक और स्टॉक था जो कि you can see monthly में bullish divergence था और फट करके बढ़ गया था. Now it's come to like it is kind of taking a dip. Now you can see in the weekly chart ये एक exhaustion था, गैप का टेस्ट हुआ. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास डबल बॉटम डाइवर्जेंस था जो ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया EMA पे, and this time we don't have a full-fledged divergence, but this could be like a 0, 1, 2 kind of setup and all of that. Even if not, just wait for a narrow monthly CPR, just keep it in your watch list, maybe because this looks like a dip, and if it starts going higher again, then maybe these prices can be touched again. So Tasty Bite is another stock that is in the list this time. Union Bank of India हमने last time भी बोला था एक head and shoulder है monthly chart में, breakout हो चुका है. So best cases CIP भी हो चुका है weekly chart में, you can see this, right? So again look for bullish opportunities daily में, जैसे for example यहाँ पे आया है, टेस्ट किया है in the daily EMA. If you get an opportunity, you can take an opportunity here as well. So just these are all long-term investment stocks, remember, right? एशियन ग्रेनिटो, इसका भी हमने बात किया था, बुलिश डाइवर था मंथली चार्ट में, EMA के ऊपर जा चुका है. हमने बोला था ये या तो यहाँ से चला जाएगा या डिप लेके जाएगा, तो ये डिप लेने के आ रहा है. तो जस्ट कीप इट इन अ लिस्ट. आप देखो इसको क्या होता है. अगर ये डिप यहाँ पे आता है और CIP पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये फिर एक अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा दे सकता है. देन वी हैव Zydus Wellness. This is at weekly. You've got daily divergence with a 0, 1, 2 probability. Dip लग रहा है, so this again मीन के ऊपर जा सकता है, but again confirmation जरूरी है. इसका मतलब हाईएस्ट तो उठना जरूरी है, मंथ ऐसे बंद होना जरूरी है, and all of that. फिर I think the last stock we have is Anuras. Anuras is basically at monthly EMA, right? And decent month. अभी भी 2 हफ्ते बचे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी देखने से लग रहा है प्रीवियस डोजी का हाई टूट गया and all that looks good. Weekly में bullish divergence है, which is pretty good. And daily में right now there's a bearish divergence, so maybe it comes to the EMA and then you make use of it if it gives you anything to do. I think there's dividend news on Monday, so Monday के बाद maybe it dips, takes a dip and then gives you another trade. So let the daily divergence get over and then you can take a call here. I think I got a couple of more stocks. Kamdhenu, again हमने पहले भी discuss किया, monthly at EMA, bullish diverge, series of bullish divergences in weekly chart, which is a good sign. And APCL, which is monthly bullish divergence, trend check, and it's gone higher as well. So this is something also that looks interesting. But apart from that, the first few, IEX, Tasty Bite, Union Bank, Asian Tiles, Zydus Well, and Anuras, these 1, 2, 3, 4, 5, 6 stocks are the ones that I wanted to discuss with you today. And आप इसको समझ के अच्छे से अपने सिस्टम पे एनालाइज करके, अगर आप फंडामेंटल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देख के फिर कोई डिसीजन लीजिएगा. All right, so that is about investment stock as well. Now all right, so anyone who wants me to look at any other stock, give us a shout out. I've got Yes Bank here and Cipla. So let's start with Yes Bank.
Yes बैंक looks all right. I mean there's no problem here as such, but इसमें कोई ट्रेंड नहीं है कि ना कि मैं कुछ बोल पाऊंगा कि मंथली Yeah, I mean, it looks all right if it months ends like this and कोई follow through हो गया EMAs के ऊपर शुरू हो गए जाना वापस से, then maybe we can start looking at this. But for now, this is an exhaustion of a previous huge gap. तो अगर इसका follow through होता है then you're good. So इसका अगर follow through ऊपर की होता है अच्छा है, अगर ये नीचे आके test होके जाता है फिर भी अच्छा है. So yes bank is that for me. Then we have Cipla. Nifty and Bank Nifty we're going to do after this. Cipla में so opportunity यहाँ पे था जब डेली में बुलिश डाइवर्ट था. ओके सो opportunity यहाँ पे था जब 30th अक्टूबर 1st नवंबर के आसपास जब डेली में बुलिश डाइवर्ट था CIP पे. अब ये थोड़ा ऊपर चला चुका है एट EMA अभी डेली में है. मे बी री एंट्री आपको मिल सकता है. नैरो CPR भी है. मे बी ऑन द अपसाइड स्टिल यस श्योर, बट एक्चुअल ट्रेड था on the 30th of October. That is your follow through candle here. That was your actual trade. Any target for yes bank? अभी नहीं, मतलब I don't have any divergence, so मुझे target अभी नहीं पता. लेकिन अगर ये एक दो महीने EMAs के ऊपर चले जाए मंथली चार्ट पे, then I would be more confident. Maybe we can you know discuss targets or something. अभी नहीं है. Maybe just draw previous resistance or something. Because the downfall ना, तो उसका resistance भी आपको नहीं मिलेगा अच्छे से. ठीक है. All right, let's do Nifty and Bank Nifty quickly. So let's start with Nifty. So I'm going to open this individually. All right. So this is Nifty weekly chart. You can see there was a divergence here. Fell till EMA. Now it's popping up. Now, of course, we want the retracement. कहाँ तक आता है? 78.6 तक almost आ गए. And आप अगर देखोगे यहाँ पे ये जो previous rejection था, this is what I call point of interest. ये अभी भी valid है. ठीक है. So अब इसी में हम daily chart खोलते हैं. Let's open daily chart here. राइट. सो यू कैन सी यहाँ से गिरा था फिर ऊपर गया. दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट. वीकली में डाइवर्जेंस है राइट. नीचे आया फिर इसको टेस्ट किया, नीचे गिरा, फिर इसको टेस्ट करा. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अब यहाँ पे क्या होगा. अगर ये नीचे खुलता है मंडे, लेट्स सी अभी गिफ्ट ठीक है, बट अगर ये नीचे की ओर खुलता है, दिस इज अ रियली गुड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. अगर ये नीचे की ओर गैप डाउन खुल जाता है और समथिंग, देन वी वुड बी लुकिंग टू फॉर अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी. अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट अच्छे से करते हैं. Let's go to a different layout. So जैसे मैंने बताया डेली चार्ट में ये हो रखा है. आर्ली चार्ट में you can see it is right above the monthly CPR. So अगर ये गैप डाउन खुलता है और इस CPR के अंदर घुस जाता है, so there is a huge probability that ये वापस EMAs तक at least आएगा, you know, if not lower. But again that is ये सोच के कि भाई यहाँ से गिरना है. लेकिन apart from this apart from this imagination, apart from this analysis or hope that ये rejection पहले है जो अभी hold करेगा, ये हमें confirmation नहीं है. ये हमें खाली इतना पता है यहाँ पे rejection है, ये hanging man बना है, इसका भी confirmation अभी तक आया नहीं है. So if Monday is a bad day, then yes we can probably think about trading it till here. अगर इसका future pivot भी खोलते हैं weekly में, तो narrow single line है in fact. So yes, you can probably get some trade down here till the EMAs and then see how it is. Till then हम next Friday फिर मिलेंगे, फिर discuss कर लेंगे. But apart from that, अगर मुझे buying entry ढूंढना है तो भी मुझे at least ये EMA तक चाहिए, daily EMA तक, तभी मैं इसमें entry कर पाऊंगा. Otherwise you can see there are a lot of gaps and trading becomes very difficult in the index itself. ठीक है. अब हम करते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का अगेन मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको. बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, लेट मी जस्ट जूम इट इन, देयर वाज अ बुलिश डाइवर्जेंस हियर, ये वाला, एंड देन इट गॉट सेंसर्ड हियर. ठीक है. सो लेट मी जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट ताकि यू कैन सी दिस. सो इट गॉट सेंसर्ड हियर एंड देन फॉल, एंड दैट्स योर नेक लाइन हियर. ठीक है. सो इफ आई ड्रॉ माय नेक लाइन यहाँ पे बनाते हैं ताकि हम वीकली में देख सकें अच्छे से, एंड एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं. सॉरी, दिस इज माय नेकलाइन, एंड इसमें डेली चार्ट में जाते हैं. ठीक है. सो डेली चार्ट में दिस इज योर नेकलाइन,
इसके ऊपर गया था गैप से R1 तक एंड फिर गैप डाउन वापस नेकलाइन के नीचे आ गए. So you see that's your double top, that's your neckline broken, change in polarity, and this seems like the prices might fall further. Now अभी हमारे पास 2 हफ्ता है, दो तीन चीज हो सकते हैं, या तो ये आया नीचे यहाँ पे करते करते मंथली सीपीआर चेंज हो जाएगा देन गिरेगा, या R1 तक गया and then this will start doing what it's supposed to do. All right, now again to understand this better, इसको थोड़ा सा हम दूसरे लेआउट में खोलते हैं. जैसे मैंने बताया डेली चार्ट में even if I get rid of the CPR, you see this properly, right? So ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये अभी पहले एक हेड एंड शोल्डर भी था, तो आप उसको वैसे भी ले सकते हो कि ये मेरा हेड एंड शोल्डर था, या हेड एंड शोल्डर नहीं, सॉरी, ये शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर, राइट हैंड साइड, या ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि फॉलो हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ एंड दिस इज गॉन फॉर अ टेस्ट ऑफ दैट ब्रेकआउट, ये भी आप मान सकते हैं. डेली में अगर डाइवर्जेंस होता है, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी. वीकली कैंडल इज वेरी पुअर, दिस इज शूटिंग स्टार विद अ बेरिश हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन. अगर इसका लो टूटता है, व्हिच इज टुडेज लो, that means you are expecting the prices to fall further. Now if you see the hourly CPR, I don't know if you can see this properly, let me make it bigger. इसको मैं एक बार ब्लैक लाइंस को हटा देता हूँ, ठीक है, so you can see this properly. So अगर आप इसको देख रहे हैं ध्यान से, तो ये रहा नैरो CPR. अगर ये ऊपर जाता है पहले 1-2 घंटे, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर गिरने लगता है, आई थिंक that's a risk worth taking, and let's see what happens next week. क्योंकि R1 और S1 दोनों बहुत नैरो है, सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि नैरो में क्या होता है. सो फॉर एग्जांपल हियर, जब R1 और S1 बहुत नैरो होता है वीकली सीपीआर में, देन वो ब्रेकआउट होने का चांस बहुत बहुत हाई होता है. ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ अस एग्री विद दिस? अगर आपने पहले भी एनालिसिस किया है अपने सीपीआर के थ्रू कि अगर R1 CPR और S1 बहुत पास में होता है, then there's a high probability that it will break out on either side and you can't take. Remember, gap up exhausted by gap down is a good setup on the downside. ठीक है, but nonetheless Monday कैसे खुलता है, that becomes very important for us in order to trade this. Okay, so that's about for Nifty and Bank Nifty as well. यही हमें Nifty and Bank Nifty का भी यही analysis था हमारा. Oh, I got few more stocks, so let's talk about that. So I've got Burger PEL वीकली EMA पे है. अभी तक डाइवर्जेंस था नहीं, अब अगर टिकअप होगा तो डाइवर्जेंस हो जाएगा. सो PEL Monday becomes important. You see it's in my blue list, which basically means that I have to watch it every day to see if there's a divergence. अर्ली में है, हो सकता है ये आपको मंडे अपटिक मिल जाए, सीपीआर के ऊपर भी चला जाए, एंड देन ट्यूसडे ऑनवर्ड्स यू गेट एन ट्रेड ऑन द अपसाइड. एकदम पॉसिबल है, और ये लग भी रहा है कि एक पुल बैक EMA तक ही है. सो यू लुकिंग फॉर बुलिश अपॉर्चुनिटीज, which is the right thing to do. Then you have Burger Paints. Burger Paint also I think has a setup. Weekly daily bullish divergence at EMA आया था, and you had a, well, you didn't have a bullish divergence, but fair enough, CPR के ऊपर गया you, but there is a point of interest here as well. You can see my horizontal line and एक head and shoulder है. So anywhere here, if it goes higher, then sure, you know, yeah, but this is why it's not in the list, because वो resistance level पे, so I need like more confirmation कि वो टूट जाएगा and everything. That is why it's not in the list, but sure. R Power, Reliance Power. Oh wow, Reliance Power कुछ दिन पहले था, यहाँ पे था, देखो 26th October there's a bullish divergence in the daily chart at weekly EMA. That is where it was supposed to go higher. There was a channel as well, I think, you know, so 0 1 2 2 3 3 पे divergence and a breakout, which is fantastic. So yeah, अभी भी ऊपर जा सकता है अगर कुछ, you know, it doesn't reject these prices, like तो bearish divergence हो जाएगा, but looks all right. But again, मैं तभी एंट्री करूंगा जब ये EMA तक आएगा, and then I get an opportunity. Otherwise it's too far from the EMAs now. Then I have PI Industries. PI Industries वीकली में शेडी डाइवर्जेंस था, yes, ऊपर जा रहा है. डेली में हो चुका डाइवर्जेंस का काम, ये ऊपर चला गया. Now you'd like to buy, so I'd like to buy when it comes near the EMAs, right? यहाँ पे मेरे लिए अभी
it's too far. So maybe it moves sideways थोड़ा सा, ये ऊपर आ जाएगा, then I'll enter. So maybe next week or maybe during the week sometime, but not right now. अभी तो वैसा कुछ नहीं है इसमें immediately. So PI industry done, and then you have Godrej Consumer. Godrej Consumer PR. Godrej Consumer में weekly में divergence नहीं है, and daily का chart is very shady, right? So let's do monthly and weekly. Let's go monthly. Monthly at EMA. Weekly you want a divergence, right? Divergence नहीं है. So अगर ये वापस आया इधर, test किया, divergence बनाया and then गया, then yes, I would be interested. Sorry, daily chart में भी ठीक है, लग रहा है there was a divergence here, ऊपर गया. I think this is a 61.8% also. See, 61.8% का retracement भी हो गया, and there was an early, oh yes, early bullish divergence here. Yes, if it gives you a follow through on the upside, sure, Godrej Consumer can be something interesting as well. Sure. Indian Hotels, is that what it is? Indian Hotel. Indian Hotels में अभी कुछ है नहीं. There was a bearish divergence, नीचे आया, ऊपर गया. No divergence at R1, fair enough, but उसके अलावा कुछ नहीं है. R1 पे है जरूर, लेकिन nothing for me now. Pidilite. Pidilite Industries, again, I can probably draw a trend line here. Let's see. सारे टच पॉइंट्स अगर मुझे कवर करने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा? Something like this, like so breaks out test and goes up. So ठीक है, मतलब अभी भी इसमें मैं क्या बताऊं, डाइवर्जेंस नहीं है. So I'm not confident in the entry. Like I would like to enter, but कहाँ करेंगे एंट्री? ठीक है, maybe there's a head and shoulder, आप उसको यूज कर सकते हो. Hourly chart में there's a head and shoulder here. If you see this, a shoulder, head, shoulder, and that seems like breakout. So if it जो CIP almost आ गया, तो अगर ये यहाँ तक आता है, so let me draw this. Hourly chart में देखो, अब यहाँ तक आता है, and then you see a hint of correct improvement, then this trade can be taken. Pidilite Industries. Sure. Then you have Dabur. No divergence once again, but above monthly no divergence. What can I say? Above monthly CPR ठीक है, यहाँ तक ऊपर space है आने का. Weekly chart में भी divergence नहीं है, और monthly chart अगर मुझे देखना है तो उसमें भी कुछ खास नहीं है. It is actually creating this. If you see this, there's a range here, and इसके अंदर है. So if I open the weekly chart here now, oops, yeah. So you see this. So either way, जब breakout होगा तब करेंगे. पहले भी हमने breakout पे डाबर किया था बहुत पहले, तो इस बार भी ऐसा कुछ होगा तब करेंगे. बट हाँ, सपोर्ट से अगर जा रहे हैं तो यहाँ से आ सकता है. So if I 0 1 2 2 3 पे you want a divergence, so either it comes here, weekly में divergence बनाए and then जाए तो मजा आ जाए. And that's my thing. Another BSML, I think. I think this is for the investment timer, right? BSML. Banari something. Monthly में divergence यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया. Oh, is this a dip? This is what you're asking, but that's too far for a dip. Anyway, weekly bearish divergence था, weekly at EMA. I mean, क्या मेरे पास और सेटअप्स हैं better? Sure. But अगर आपको लगता है कि ये सेटअप मतलब ये डिप है and then you're looking for an up move, then यहाँ पे कहीं पे divergence होता तो better रहता है. वो मेरे पास है नहीं. But yes, candle today, I mean this week is brilliant. So I'm not sure about this. Tata Chemical. Tata Chemical, 012. So bearish divergence था, फिर ये ऊपर गया. I think there's a retracement here. This is monthly chart, by the way. So retracement हुआ. वहाँ पे weekly में bearish divergence था, so it's falling. And this
अभी कुछ बुलिश कुछ है नहीं, सो मे बी लेट इट डू इट्स थिंग एंड देन अगर कोई सेटअप बनेगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, है ना? सो अभी लाइक nothing for me to say on this particular stock. Alright, तो ये हो गया हमारा हमने निफ्टी कर लिया, हमने स्टॉक्स कर लिया, हम कमोडिटी अवॉइड कर देंगे आज भी, एंड हमने कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स भी बताए. सो थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. Until then, stay safe, trade safe, and always remember you don't have to trade every day. You can, choose your days, choose your good days when the stocks are very, very obvious to trade, and only trade those days. On another stock, okay, just before going, I'm gonna finish this because I don't Anik Industries. Oh, sorry, why did I do good? Anik Industries. Monthly at EMA is going higher. Started from here with a bullish divergence. At EMA. It's going, yeah, looks all right. Maybe I think previous highs tak, if nothing goes wrong, it looks all right. Yeah. All right. Thank you very much. It was a pleasure. And I'll see you next Friday. Till then, have a great week. Have a great weekend. And go India. Take care. Bye-bye.